So ये जो देखा अभी, I think most of you can relate यहाँ पर. What was it? What was the movie about? Go back to the first slide. Can I stay there? ये जो अभी आपने 30 सेकंड का देखा, can anyone guess what it was? Yeah, वो जो brown smoke था, अभी कुछ महीने पहले हम लोगों जैसे there was a brown person going through the chimney. No. So in the funeral home, that each of us was soon, किसी के लिए जल्दी, किसी के लिए बाद में, each of us is this brown smoke coming out. And just to get a perspective कि type sensitivity, urgency, attention देना कहाँ समय जा रहा है, क्या कर रहे हैं, इसके लिए तो फिर the challenges that we're facing. This is us. If we don't, between now, this moment, अभी ये कानों पे आया है, between now and the time that we end up here, ये कहाँ गया क्या कुछ पता नहीं. We do have certain choices to make, and that's what the topic is. Before we end up like that, so now you can go to the next slide, Kana. So the topic was rebalancing life. Balance is all, जैसे गीता में it's all about balance. समता शब्द आता है गीता में, समत योगस्थ कुरु कर्माणि दूसरे अध्याय में आता है. संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते. समता ही योग है. योग सिद्धि करना चाहते हैं, योग की प्राप्ति, ईश्वर का अनुभव, जो जिसकी जो भी हो, कि जब तक बैलेंस नहीं हो सकते तब तक लाइफ इज इन ट्रबल. इट्स ऑल अबाउट बैलेंस. इफ यू टेक फिजिकल हेल्थ फॉर एग्जाम्पल, पहले जो डायबिटीज होता है तो क्या होता है, इंसुलिन का या शुगर का क्या होता है, इम्बैलेंस, है ना. दैट्स ऑल इट इज. एक तो ज्यादा हो जाता है, कम होता है. या ब्लड प्रेशर का होता है, हाइपरटेंशन हो जो भी, तो क्या होता है, जितना रहना चाहिए ब्लड प्रेशर उससे या तो ज्यादा होता है, हाई बीपी, या लो भी कम होता है ना. जिसको किसी सोडियम का होता है तो क्या है, लो सोडियम, हाई सोडियम. कैंसर होता है किसी को तो क्या होता है, जितनी नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए सेल की वो इम्बैलेंस हो जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो जाता है. कोई गिर जाते हैं, है ना, 80 के बाद कहते हैं वो जो फिसल की गिरता है उसके बाद वो, तो गिरते हैं मतलब क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता है ना. भैया आई एम ओके. अगर आपको लाइट ऑन करने हो तो कोई ऐसे कोई जरूरी नहीं अंधेरा करने की. आई थिंक यू शुड बी एबल टू सी इट. सो द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग, यहाँ पर जो अगर चैलेंजेस जो लग रहे हैं, मन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, रिश्ते भी जब बिगड़ते हैं किसी के साथ, जब जीवन में जो भी टेंशन आता है. So before I unpack the whole presentation, I really want to hit hard on this point that we have हम लोग जब जन्मे थे उस समय चॉइस नहीं था, है ना. जहाँ जिस घर में जन्मे, जो माता पिता, जो भाई बहन, जैसा घर, जो भी सोशल इकोनॉमिक, जिस मुल्क में, जिस देश में, कहीं वॉर चल रहा है, कहीं कुछ, we had the resources that we had, whatever we had access to, we had to take that. So some got really good access to resources, some did not. We got whatever we got. Like everybody got one thing common. Like you and me, everybody got, all humans, 7.48, however, everybody got, regardless of God, and make say one thing, the biggest thing, everyone got. ये भगवान का न्याय है. And that is the power to choose, power of choice. What do you choose? How do you choose to use what you have? What choices do we make? So अगर imbalance लग रहा है जीवन में, we have the choice to rebalance it. If you go within, if you think about कहाँ से हो रहा है, like any trouble in life, look for imbalance. Rather than blaming someone else, rather than ये कहाँ पर imbalance हो रहा है अपना सोचे. Because the life is all about achieving balance and yeah. So and use the power to choose, no matter what we have, what we don't have. So with that, let's launch into the deck, Kanaga. Let's go to the next slide. Thank you. So otherwise, this was made for the TED Talk. It's not like fully relevant. Like, let's use what I have, and I didn't get the chance, or I did not have the appetite to customize it. ये slide निकाल के वो करो, इतना नहीं था. तो the point here was that imbalance जो कहते हैं हम लोग, टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी है, जीवन में मुसीबत लग रही है, यहाँ पर रह रहे, इतना पैसा है फिर भी ऐसा हो रहा है, गोली खा रही है, नींद नहीं आ रही है,
पता नहीं क्या करे, ये ना इंसैनिटी का जो लक्षण है, इस पर इंसेन डाटा अवेलेबल है, इंसेन डाटा ऑन इंसैनिटी, मतलब अनबिलीवेबल। ये जो पेंडेमिक जैसा है अभी, whether or not we accept it. So the point of bad news first was in corporate America. What was hammered in my head was bad news first. Like when you work in the C-suite, you have to know the bad news first. What is going on wrong? You got to fix that nicely. So the bad news, and the rest hopefully is good news in this deck, is that if you are a family of 4, take this seriously. If you are a family of 4, like my family, chances are that at any given moment, one of the 4 of you is challenged with mental illness, with stress. So don't underestimate it. Don't think, nahi, sab theek chal raha hai. Nahi, wo to aate jate hain, karte hain. Look for those signs or have some space. Chances are, this is the average. By the way, this data, I did not make it up. This is from very credible organizations. This is World Economic Forum, World Health Organization. Very tested, proven data that I sourced from. And there are other sources that I can cite also. So across the board, average at any given time, 4 लोगों का परिवार हो तो उसमें एक कोई स्ट्रगल कर रहा है अंदर में, कुछ ना कुछ हो रहा है उनके, अगर ध्यान दिया जाए तो उसकी कोई गिनती नहीं। 350 एक्टिव डिप्रेशन है, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा स्ट्रेस है, थोड़ा टेंशन है, मेडिसिन से है, मेडिसिन से नहीं हो रहा है, साइकियाट्रिस्ट लगा ऐसे, दैट नंबर 8 million, मतलब 80 लाख, right? And this was 2020 जब the pandemic की पहली बार हुई शायद, I think 8 million deaths every year happening. And then we take things for granted. उसमें 1 million are suicides, people who can't handle it any longer. But here's the big deal: for every one suicide that actually succeeds, every suicide that succeeds, for one suicide that's successful, मतलब मर गए, there are 9 who have tried and failed. This is the data. जो एक और जो suicide जिस एक का अगर successful हुआ, तो that's the failure of entire humanity. ना? अगर कहीं पर भी इस धरती पर कहीं पर भी कोई अगर आत्महत्या करता है किसी का टेंशन से, वो मेरा फेलियर है, मतलब I'm talking about me, the person who's talking right now, जिसका आवाज सुन रहे हो तुम, उसका फेलियर है कहीं पर भी, whether or not I know that person on this planet, that because we're all part of the system, and so it's our obligation to uphold it. So it is mind-boggling for everyone. There are 9 who have tried it. It didn't work out for one reason or another, but they were there. They came close to it. They really wanted to. So ये affluent countries भी हो, जैसे यहाँ US ऐसे नहीं है कि पैसे ज्यादा है. This has nothing to do with money, by the way. कितना भी बड़ा मकान हो, कितनी भी गाड़ियाँ हो, money does not affect ये जो सारी slide जो इसके बारे में. This is completely about the internal world, not the external, as you will see. ना? So India wants to be a 6 trillion or more economy by 2030. ये इसके पहले it's already tracking this cost of it. A majority lack of resources. उनको पता नहीं क्या कहाँ जाए, क्या करे, कैसे help, where to ask for them. So that was, I know that's not a bad tone, but that was the bad news first. I just wanted to impress upon your mind to not take this lightly, all around us. So Kana, let's go to the next slide. Well, actually, go back to the one. Sorry. This is the one here. So when I say majority lack access to resources, so by the way, for those who are on the phone, we are on slide 3. And then we're about to go to slide 4. I'm looking at the bottom right corner, majority lack access to resources to help. कि लोगों को पता नहीं कि कहाँ कैसे help के लिए किसको पूछे, कहाँ research करे, कौन सा article, कौन सा कौन सा किताब, कैसे. So then, what about those who do have access to? अभी US में यहाँ पे तो access है हम लोगों को, अगर चाहिए help है तो. So kind of what happens? Let's go to number 4, slide number 4. अगर कोई प्यासा आए घर पे, बहुत तरस रहा है, पानी चाहिए, गिलास पानी दे दो, तो आओ दे लो पानी, और फायर हाइड्रेंट खोल दिया उसके सामने, तो प्यासा रह जाएगा, वैसे ही मर जाएगा पानी के फोर्स से. तो पानी तो एक बूंद नहीं जाएगी इसके गले में, है ना, ड्रिंकिंग फ्रॉम द फायर होज जैसे. वो जब खोलते इतना ज्यादा मिलता है कि पता है उसको, उसका भी उपयोग नहीं है. इतना एक्सेस, इट्स लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इंडस्ट्री. कितने apps, by the way, 60% struggling with are under 45, under the age of 45. The day that I was doing TEDx वहाँ पर नागपुर में,
there were 35 million subscribers to उसके YouTube पे वो topic को देते हैं, मतलब मेरे इंटरेस्ट में नहीं, it wasn't live, but the topic, this topic, essentially mental illness या mental health, 35 million तो उस topic के subscribers हैं, $100 billion industry है, podcast सुनते लोग while running, there's 200,000 podcasts. Oh, क्या 500 million Google plays per month, 6 billion every year. 6 billion times someone is quietly looking on Google. What should I do? I'm struggling with this. And Google produces this data, topic को लेकर के, essentially. So, अच्छा life coach करने 70,000 है, किताबें पढ़ने हर साल 45,000 books are being produced. So the point is that's a fire hose. How do I know which coach do I go to? Which book do I read? Which app do I put on? तो app का तो अलग ही दूसरा और है कुछ data. So it becomes too much. I have access, but I have no idea where to look, what to do. कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई वो कर रहा है ना, इधर उधर भागने, और मेरे actual problem कोई समझ नहीं पा रहा. Why am I struggling? Exactly क्या हो रहा है मेरे जीवन में? Because they don't know, personalize नहीं customize. Kind of, let's go to the next slide. So this industry, $100 billion industry came together. वो user group होते हैं, some of you might know user group conferences होती है. Products जो बड़े launch करते हैं ना, Microsoft, Apple वगैरह, तो वो, but they bring their users together in large conferences and ask them कि क्या कैसे, what improvements can we make, what is working, what's not working. So these are self-identified. मतलब उन्होंने खुद ने discover किया the industry that, well, there are the top three challenges. अब ये तो सब तो है, इतना पैसा तो लोग खर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है उसमें. जितनी भी ऐप है, जो भी किताबें पढ़ रहे हैं, फिर पूछा क्वालिटी नहीं का क्या मतलब, बिकॉज क्वालिटी नहीं इन द सेंस दैट इफेक्टिव नहीं है. इट्स नॉट मूविंग द नीडल फॉर मी. आई सब्सक्राइब टू योर ऐप, आई डू दिस एवरी डे, लेकिन फिर भी स्क्रैचिंग द सरफेस, इट्स नॉट एक्चुअली चेंजिंग माय लाइफ from where I am to where I need to be. Well, why is that? Because it's not personalized. But by personalization, you can change the color, you can change the graphic, or you can say, oh, I want this background, that background, put all that. But that's not it. What's troubling inside my heart? I don't know how to tell you about my sister-in-law, about my brother, about my mother. ये अलग ही प्रॉब्लम है जहाँ जो लोग सफर कर रहे हैं. मेरे बेटे का ऐसा है, मेरे बेटी का वो नहीं हो रहा है, मेरे मम्मी का उधर इंडिया में हमें ये वो कौन से ऐप में, कौन से किताब में, कौन सा कुछ क्या करेगा ना, अंदर तक नहीं पहुंचता है कितना भी करके. सो वो भी फेल हो गया है ना. पहले तो एक्सेस नहीं है रिसोर्सेज, इसलिए फेल हो गया. रिसोर्सेज मिला तो वो भी इतना ज्यादा दे दिया तो वो भी फेल हो गया, और जो मिला उससे फिर ये नहीं हो रहा तो वो भी फेल हो गया. So as I was processing this a few years ago, I wouldn't say that I was struggling necessarily, but I wasn't fully there where I needed to be, like I am today, standing in front of you. And my family, my immediate family, my extended family, I could see all around me who was such a one for. There were so many people in the spiritual community, in the ashram community. Like there's no end to it. कहाँ पर suffering चल रहा है? It's very hard to spot. लेकिन guaranteed है. It's difficult to know, but it है पक्की बात है ना वो. इसलिए then I just said, okay, I've got to do something because I have an obligation for my family. और अगर मेरे, if I want to help my family, first I need to be on the secure ground, है ना. पहले अपन ढंग से जी सके तो उसके बाद ही कुछ एग्जाम्पल. And so, kind of, let's go to the next slide. So we're going to slide 6. And so I came up with a model that I presented in the TED Talk that works for me. And I call it my inward pass. Inward क्या? क्योंकि ये सब सारे solutions बाहर के हैं. लेकिन problem inside है. तो बाहर से कितना भी किया तो अंदर कैसे जाएगा वो? I want, if the problem is within, anxiety within होती है ना, depression within होता है, stress, tension जो भी मुसीबतें वो अंदर में लगती है ना, बाहर तो मस्त फर्स्ट क्लास हो रहा है, एसी में बैठे हैं, तब जो कोई प्रॉब्लम है बाहर से, अंदर में हो रहा है सब. So the solution also has to be from within. Why? Because the key is inside. As I said, sometimes in the Gita I say ना कि Gita योग में the only way out is in. बाहर निकलना है इस पिंजरे से, अगर इस छुट्टी करनी है मोक्ष प्राप्ति की तो पहले अंदर जाना पड़ेगा, तभी बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि चाबी अंदर रखी हुई है. इसलिए और पास मतलब ये अब तक जो था वो फेल था. I wanted something that would be pass. Pass, it happens to be an acronym that I created also. It's a short form, PASS.
but I once and for all I wanted to pass. कि वो पास ही गया था ना, पास कोई से अंदर जाने के लिए गए थे, भैया पास है तुम्हारे पास? हाँ हमने पास लाया। अच्छा चलो अंदर चलो। अंदर जाने के लिए you need a pass also, and so it applies in many different ways. I wanted something that is portable, adaptable, scalable, and simple. What does that mean? Portable मतलब अपने साथ ले जाए, जहां पर भी हो, जैसे भी हो। अभी ये लाया, फोन लाया तो वाईफाई करता है। अभी मैंने वो रिकॉर्ड करने के लिए ऑडियो लाया था, चार्ज करके रखा था, this is sitting here because I don't know how, but इसकी बैटरी खत्म हो गई. So whoever is live, I guess, gets it unless my phone is recording. So no matter what, ये तो वाईफाई नहीं है, बैटरी नहीं है, फोन भूल गया, चोरी हो गया, कुछ हो गया, ऐसा वैसा, it doesn't matter. I needed something that's absolutely, जैसे मेरे अपनी अकल जो लाई है, वो कोई मेरे को याद नहीं रखना पड़ा, लिया है कि ग्लव बॉक्स में भूल गया कि अरे घर में रह गया है, कैसे मैं आया तो मेरे आता नहीं, अगर है तो, है ना? तो ऐसे कुछ चाहिए था जो पोर्टेबल, completely wherever I am, my model is with me, my framing is with me, that I take it with me because it's inside. That's the key. है ना? I wanted a model that's embedded within me, that is a part of me, that becomes a fabric of me. So that's portable. अडेप्टेबल क्या है कि जैसे चेंज होते, इंडिया में गए तो लोग ये बहुत करते, ऐसा कैसा हो गया, वैसा इतना कम खाते हो, इतने दूल्हे हो गए, मर रह गया, कैसे वो जहाँ की सोसाइटी जो जैसी उसको अप्लाई हो सके। यूएस में आए तो अलग होता है, रिलेशनशिप चेंज होते हैं, जॉब चेंज होते हैं, बॉस चेंज होता है, सिचुएशन चेंज होते हैं, कभी जॉब रहती है, कभी जॉब नहीं होती है, कभी बच्चे ढंग से चलते, कभी नहीं चलते. So no matter what the situation is, I wanted something that's adaptable, flexible, not ऐसा है इतना इसमें जैसा जितना वो उतना होगा. That should have no limit. That no matter what, I should be able to play with it, and it's scalable. So this model, it's a simple model. It works for me, and I'm certain that if you made it yours, it will work for you also. If you left it to me, mine, it will not work for you. Not guarantee 100% will not work for you because you're using my model. You gotta have your own model. But today I'll give you the simple framing of it, and that's that topic. Scalable, but the beauty of that, my model does not only work for me, it works for my family, it works for my community, it works for my ashram, it works for my religion, it works for my nation, it works for my planet. And that's the scalability of it. एक से जैसे मतलब वही प्रिंसिपल्स, वही मॉडल अगर हम अपने धर्म को लगाते हैं, सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म, और तो भारत को लगाते, भारत को ऊपर कराना है, या तो ओवर स्पेस में जाकर के अपनी पृथ्वी की रक्षा करिए, इतना ज्यादा स्केलेबल मॉडल है, या तो एकदम माइक्रो लेवल पे जस्ट मी एंड my model. And definitely the most utility of it is like within your family, certainly. The 3 or 4 people that you're committed to, that you're obligated to, that you're accountable for, that it definitely is. और सबसे बड़ी बात प्रभु, be simple. I was sick of it. ये ऐसा टेक चाहिए. अभी इतना करने के लिए मेरे को मेरा चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर साथ मिलाना पड़ा, कहना है, इसलिए I'm all right, otherwise I'd be struggling right now. I also wanted something that is very simple, you know. So that's that inward pass. Let's go to the next slide, which will be slide 7, I think. Yeah. So reframing to rebalance. So essentially, we're trying to reach balance. कि मैंने शुरू में कहा कि सारे प्रॉब्लम जो है चैलेंज से के जीवन में सोल पे अगर जाते, why is this happening? You will be able to trace it to some imbalance somewhere. Physical हो challenges, तबीयत के, mental हो, psychological हो, financial हो, there's some imbalance because the system is set in balance. The system is set in goodness. The default setting is balance. ये जो सत्व रज तम तीनों गुण थे जब इक्विलिब्रियम में होते हैं, फिर कोई मुसीबत नहीं होती. जब वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो फिर सब ये वॉर ये वो सब शुरू हो जाता है. So बस उसके उल्टे जैसे सिक्का होता है, उसके उल्टा कर दो तो दूसरा दिखता है ना. You don't see what's so balanced and imbalanced, which means it's implied in that if I am seeing imbalance, I think I have the ability to flip the coin. I should be able to, if I'm holding something that is imbalanced, I have the ability to flip it to the balance. Itna aise ho sakta hai with that agar you apply it to. And then all the negativity, jaise main Gita Yog mein kabhi kehta hu ki Arjun Vishad Yog se param hota hai, first chapter se. And all the negativity is filtered out. जैसे वो इंडिया में जाते रिवर आसमान से आरोप
फिल्ट्रेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो सारा निकल जाता है, देन यू गेट क्लीन वाटर। वैसे ये जो 18 चैप्टर्स है गीता के, इट्स वन फिल्टर आफ्टर अनदर, ऑल द विशाल ट्रांसफॉर्म इनटू मोक्ष, मुक्ति जो होती है। So this is what I mean. Next time when we ever to take this topic, there is a Gita shloka associated with every slide. And so here's the one simple thing I'll leave you with also, because we have not yet come to the model. But when you see it, then the question becomes, where should I start? How much should I do? With those simple answers, this absolutely works. This was my formula, and I am the most ordinary person that you can think of. Average. So don't think कोई अलग से कुछ special है. If you're average, if you consider yourself ordinary, then it can work. Do two things. Start where you are. So start somewhere. बस इतना simple है. Start somewhere. What should I do? कितना करूँ? इतनी simple है. Do something. बस ना, एम्पावरिंग है, स्ट्रेस निकल जाता है कि ये रोज ये चार्ट बनाने हैं, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, अभी नहीं हुआ, उसको फाड़ के फेंक देना। एक सीधा सिंपल मंत्र, स्टार्ट समवेयर एंड डू समथिंग अबाउट व्हाटएवर योर चैलेंजेस दैट यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग इम्बैलेंस टू बैलेंस। फिजिकल है, स्टार्ट समवेयर, डू समथिंग ना। द मेंटल है, ये पढ़ाई नहीं हो रही है, व्हाटएवर रिलेशनशिप है, इतने अभी 3 साल से हमारे रिलेशनशिप बहुत डाउन हो गए, पता नहीं वेयर शुड आई स्टार्ट, क्या करे, कैसा करे, गिफ्ट दे, वेकेशन पे ले जाए, करे क्या करे। ना, डोंट ओवर इंजीनियर इट, डोंट ओवर थिंक इट, डोंट ट्राई टू ओवर सॉल्व इट। They do one thing simple, and that is you can do, everyone can do. Start. Pick up the phone, say, hey, you got a minute, I want to talk to you. No, start somewhere and then do something. The initiative, and you see the magic of this simple formula. Starting somewhere, doing something. Is that if you do something every day, it's something every day. Next, something every day, something every day. That day will come. Someday you'll find yourself doing everything. The words will fix themselves up. If you do something every day, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं, when you will say, ये खबर के, wow, I am running, I am meditating, I'm reading, I'm sleeping on time, I'm getting up on time, I have my diet under control, look, my vital signs are good, all of it, my weight is under control. How did this happen? When did this happen? Well, something consistently. I did not bog myself down, I did not stress myself, I tuned out was of pressure, ऐसा करना चाहिए, इतना करना चाहिए, उतना। I didn't care who it was telling me, doctor ho, guru ho, shastra ho, this had to be my own model. Something every day has gotten me to where I do everything someday. And what is that everything? That whatever everything I decided to do for me, that is where my well-being is. But not well-being. So again, this is empowering, that it completely gives you the control. It says, okay, you are going to decide how this will work, because only you know your problem the best. No doctor, no lawyer will know exactly if you start with the new law. The solution is within you as well. And now let's go to the next slide. This will be slide number 8. So don't let anyone tell you that you cannot. You need the books or coach. You can create a system for yourself. I created the system for myself. And you can have this, you can make this your own, but fill it with your own. This is a template, what you will see. I'm just building up to that. And it's going to be very underwhelming. It's a very big deal. That's what I'm trying to tell you. अभी तो मारो दिखाया नहीं, अभी आधा हो भी गया। पर जब देखोगे यार, ये तो चिल्ला बात है एकदम। इतना क्या, इतने की बात कर रहे थे जीतू भाई, वो यही बात करनी थी, चिल्लर ही बात है अगर सोचे अंदर में करे तो, है ना। नहीं तो सुनते नहीं थे, इतना घर कर लिया था। तो लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है? This is informed by my past, with a sense for my future, and it's executed in the present moment. What does this mean? इसका क्या मतलब होता है कि देखो, मेरा जो इतिहास है वो पर्सनल इतिहास है। जिस घर में मैं जन्मा, जिस स्कूल में मैं गया, जो किताबें पढ़ी, टीचर्स मिले थे, जो भी, वो तुम्हारे नहीं थे। ऐसा का वैसा नहीं था। एक स्कूल में भी गए, एक किताब भी अगर पढ़े, लेकिन किस समय पढ़ा, कैसे पढ़ा, घर का वातावरण कैसे था, भाई बहनों का क्या चल रहा था, you didn't have that, and yours I didn't have.
So I have a complete past myself. You have a complete past. Those are very different. Just because we look like we are humans does not mean that we are all like, one size never fits all, especially the inside world. Never. Each of us have created our own world. ये बाहर का दिखने वाला एक ही दुनिया में रह रहे हैं हम लोग. यही ऐशबर्न है, यही यूएस है, यही सब ऐसे रास्ते रोड पे चलाते हैं. बाहर की दुनिया काम आने सकती है. अंदर की दुनिया सब की अलग है. दो के भी नहीं. भाई भाई की दुनिया सेम नहीं है. माता पिता की दुनिया सेम नहीं है. जुड़वे भाइयों की दुनिया सेम नहीं है. भाई बहन की दुनिया सेम नहीं है. अरे सब सब सेम है ना, लेकिन वो बाहर का होता है, अंदर का सब अलग है. हर एक का अपना संसार होता है ना. जब इसलिए you got to pay attention to your past system, better take care of it, and then with the sense for my future, like where I want to go is not necessarily where you want to go. मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है जीवन में आगे चल के, वो ऐसा जरूरी नहीं. जनरली ठीक है, लेकिन अंदर में जो फुलफिलमेंट है, जिससे शांति समाधान मिलेगा, वो आपके आप ही जाने. So we have to take that into account. This makes it highly customized, highly personalized. This becomes like only yours. This model becomes like itne 7.5 billion or however many. Only one person uses this, and that product will obviously the product will fail, but it has the power for everyone to be able to do that. इसलिए free में है क्योंकि कोई खरीदेगा नहीं इसको. No, so and then the third thing was on the slide was it has to be executed in the present. मतलब इसमें मेरे past में ऐसा था, मेरे future में ऐसा जाना. It takes that into consideration, but the biggest deal is it has to be in the present moment. और जो भी हम भी तय करेंगे, when you see the model, it has to be done in the present. आज रोज में होना चाहिए, इस समय होना चाहिए. Present moment is the only moment. ना जो zen कहते हैं, the super zen is this present moment. ये क्षण जो है उसमें निकल. अगर something that will lift my strength, this is for ourselves, for our family members. इसको asset based training कहते हैं. मतलब rather than saying अरे ये हमसे नहीं होगा, इतने प्राणायाम नहीं बनते हैं, ये हम उनको पास नहीं कर सकते हैं, इतना मंदिर में नहीं जाना, इतने पैसे नहीं है इधर जाने के लिए, जो भी हो, ये सारे वीकनेसेस है, डेफिसिट है, जो नहीं है उस पर ध्यान. कुछ तो है तो उसको लेकर के चले. जैसे वे कृष्ण की कथा आती है, सात्यकी, कृतवर्मा, सुदामा. कृष्ण के जो मित्र थे, सुदामा मतलब वो सुदामा ब्राह्मण वाला नहीं, दो सुदामा थे उसमें. वो तो उधर वाला था, गुरुकुल वाला, लेकिन एक सुदामा वो विकलांग था, उसके साथ ही गोकुल में पला था. ये सब मिलके जा रहे थे. कुत्ते को यू सम ऑफ मेरा हर्ट है, वो जो रोगी कुत्ता था, वो सब लोग हंस रहे थे, कितना पापी होगा ये, कैसा कितना पापी कुत्ता हो गया, कैसा हो गया ऐसा. और कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, लेकिन हो सकता है तुम मुझसे पापी हो, उस कुत्ते से. बोले ऐसे कैसे, ये क्या बात कर रहा है. बोले अच्छा दांत दिखाना तुम्हारे दांत. इसको क्या हो गया, दांत का दिखाना. अच्छा तुम्हारे दांत दिखाना. अच्छा तेरा कृतवर्मा तू दिखा, सात्यकी तू दिखा, सुदामा तू दिखा. बोले अरे हाँ, कुछ ये तुमसे ज्यादा पुण्यवान है. तो बोले कैसे, दांत से क्या, इसके दांत देख कितने चमक रहे हैं. और कुत्ता मन में कर, इसके दांत कितने चमक रहे, कुत्ते दांत चमक रहे हमेशा, नो मैटर व्हाट. और तेरे दांत देख क्या कैसा लगा है. तो कुछ ना कुछ तो इसका पुण्य का फल है, कुछ तो इसमें अच्छा ही है. उसकी नजर उधर जाती है, तो बाकी कुछ नहीं. उसके बाद वो दांत चमक रहे उतना ही है, लेकिन उससे भी चमक रहा, उससे भगवान का ध्यान गया उतने में भी. ऐसे ही कितने भी, कैसे भी कोई हो, एवरीबडी हैज सम स्ट्रेंथ. रावण की भी प्रशंसा करी राम जी ने ना. तो अपने ये तो जो भी होगा, कोच, किताब, ऐप, मेरे स्ट्रेंथ मैं जानता हूँ. व्हाट इज इट दैट आई कैन डू, what is possible for me, what do I like to do, what am I good at, what do I have fun doing. We know our own strengths. So I want a model that will lift my strength up, not based on deficit. The purpose हो जीवन में, उद्देश्य, why are we existing. अंत में what do I want, what's the end goal, to what end. Ask yourself this question in making a decision, making a choice. और जो भी कुछ हट हो, जिद हो बहुत ज्यादा, टू व्हाट एंड, व्हाई एम आई डूइंग दिस, किस लिए, इससे क्या मिलेगा, क्या चाहती क्या हूं मैं ये सब करने के लिए ना. So then once you identify the purpose, something that will align with my purpose, and then in the process gives me the balance and kind of don't be on your phone. Just kidding. And
inspires others. To be honest, like when you see a role model, when you see someone living a balanced life, others feel like, yeah, maybe I should be like that. So let's go to the next. I meant it as a joke, Khan. I'm sorry. Yeah. No. Next slide, please. So I may not go through this because this is the midpoint of the presentation, but essentially इसके जो लाभ होता है, the values, मतलब मूल्य जो हमारे होते हैं, you know, this is very important for me. Whatever it is, truth, for example, or किसी को hurt न करे, जिसके जो अलग-अलग, again, your values may be very different from my values. मूल्य जिसे कहते हैं, जीवन के मूल्य, principle, सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है? हर एक के अलग-अलग होती है. So the model, no matter what your value is, it does sharpen the focus on that. It helps us to prioritize the primary. सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पहले करना चाहिए, तभी होता है काम. It does propel us to do that. Choices streamline हो जाती है. इतनी choices, कितने choices आज किसी भी वस्तु कुछ भी करना, choices तो पागल हो जाते. हरी choices ही पागल हो जाते हैं अंदर विचार. It's streamlined, gives us a method to choose the right one. And then integrating efficiencies, meaning जैसे वो लोग efficiently ये काम तो बहुत efficiently करे लेकिन इतना waste इधर waste हो रहा है, या था वो ढंग का कर ले लेकिन इतना waste है. The whole life becomes, every moment, every day becomes very efficient. You're not wasteful. You're not wasting time. You're not wasting water, not food, nothing. You're wasting nothing. And that because it becomes an integrated approach, the way to live. So then, therefore, let's go to the next one slide. Slide 10. This is it. The underwhelming, what is this? This is the framework. I made it mine. This is original. I don't think you'll find this anywhere. Any coach, any app. Maybe someone thought of it. If they stumbled on it, that's another matter. But the beauty of this is everything that I just described. अभी तक जो मैं बात कर रहा था वो, तो इसमें क्या है? खाली 4 सर्कल तो है. ये आउटर एक सर्कल है. The inside इसको मैंने fill कर दिया. Otherwise this could be just a circle also. But there's a reason why I filled it. Tell you that. Then ये दूसरा सर्कल है. The red, the green, the blue, and the black one. And then I'm just having some fun around it. The outer circle. So ये 4-5 circles draw किए हैं. I'd rather draw my own circle than have someone draw circles around me, if you know what I mean. है ना? अगर कोई circle ही draw करने वाला है, तो अपन अपने circle draw करें. And so that's what it is. And it is 4 circle है, the red, green, blue, and the black. For me, they represent, I'll explain that to you in the subsequent slide, my core, my personal well-being, my key relationships, my bread and butter. Yeah, जो पर ध्यान देना चाहिए उस पे. So let's take one at a time. What do these mean? How does this work? All of that. So let's look at the core first. इसको core कहते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे my core. The first one is my core. The second one is my personal well-being. The third one is my key relationships, and the fourth one is bread and butter. So it is in that order. This is the most important, the innermost. कहते भी innermost शब्दों की अगर ध्यान देते हो ना, innermost जो है वो सबसे important है. The next more important. So this will be more important than that, and the green circle will be more important than the blue one, and because I've set those priorities for me, and the black will be. So if I can have this visual with me with those 4, it's very easy, it's very simple. Then then I don't need कोई Gantt chart, कोई prioritization, Franklin planner. ये वो सब tools. I have experimented with all of those myself. Time management, ये वो सब. You just take your own model with you with that, because your priorities straightened up. You're always doing the right thing at the right time in the right way. So let's talk about the core connectivity. I want to go to the next slide, number 11. Core मतलब क्या होता है? जो किसी की वस्तु के अंदर में जो सबसे बीच में जो होता है ना? So what has core? Who has core? You will be surprised. शास्त्रों में आता है, everything is a core. ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् यंत्र रूपाणि यंत्रारूढ़ानि माया. 18वें अध्याय में आता है. सब में कोर है. अथवा तो 10वें अध्याय, ये तो 18वें अध्याय का 10वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आशय. आशय मतलब essence, core. And that, so, and I'm not suggesting that Krishna be your core, but my point is that if you study physics, chemistry, high school, if you remember, everything has a core.
एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, कंपाउंड्स हो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो, सब एटॉमिक के सब एटॉमिक पार्टिकल अभी तो कितना मतलब एकदम कंप्लीटली डाइसेक्ट कर चुके हैं. And then they find at the core of that is the combination of energy and information. अर्थात शिव और शक्ति. एनर्जी इज शक्ति और ज्ञान इंफॉर्मेशन, ये दोनों का जो इंटरप्ले, द एनर्जी इज द सबस्ट्रेट ऑन विच राइड्स द इंफॉर्मेशन अक्रॉस द बोर्ड इन एवरीथिंग. मैं ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एनीथिंग. जैसे वो कमरे में से प्रहलाद के लिए नरसिंह निकल गया, क्योंकि सब में सब है ना. That energy and information can manifest at any place at any time. So ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन honestly when we go to the gym, what do we say? I want to strengthen my core. Core exercises. Why do we use that word core? The torso of the core has to be strong, right? और पृथ्वी का core होता है ना, सुना होगा the core of the earth. It's holding gravitational mass होता है. एक core नहीं होता, solid नहीं होता, तो कब का पृथ्वी टूट चुके थे, टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, कब के खंड खंड हो चुके थे. पृथ्वी तो छोड़ो, गैलेक्सी आकाशगंगा इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स कोर. जिसमें ये इधर दिख रहा है, द सन जिसकी इतनी गाथा गाते हैं, समवेयर अराउंड हियर एक छोटा सा जो डर दिख रहा है, इस सन उसके वो हो रही थी इधर कितने, all of that colossal mass has as the core. Corporate, you probably heard core values. The corporation center around these are our core values. Oh, Grand Sequoia, Redwood Forest, so the biggest trees have a core also. Everything. The point being, everything has a core, which means I have a core, you have a core. If core is the most common, if core is the most important, if core is the deepest, and if core rot forget, so we might lose. Then if I have a core, do I even know what my core is? Let's go to the next slide. What is that thing called core? Core is the prime mover. This is a technical term in electricity जब generate होती है, तो there is something called prime mover. वो बड़ा रोटर जब घूमता है, उससे फिर बाकी सब wheels and results चलते हैं, उससे electricity generate होती है. It is my core that's moving me. It is your core that's moving you. It's a prime mover. So now you should define what your ये सारा मॉडल by the way, the whole thing for you to put together your own, एक दिन भी नहीं लगता, आधा दिन भी नहीं लगता. हो सकता है चौथा ही दिन लगेगा, मतलब 4-5 घंटे, आधा दिन तो सो लेते हैं, 4-5 घंटे लगते हैं, वो भी ज्यादा हो गए. थोड़ी क्लैरिटी हो, थोड़ा ध्यान करके बैठे या सैर करने जाके, तो 1-2 घंटे भी पूरा का पूरा बन सकता है. जीवन के लिए हो, जीवन भर के लिए हो सकता है. एब्सोल्युटली. सो द कोर should be so deep. Go deep, go deep, go deep. Push yourself to find out that इतना प्रिय है, इतना जरूरी है मेरे लिए ये बात, that I don't even exist without it. Now, I'm not suggesting कि भगवान ही हो, कृष्ण ही हो, ऐसा कुछ नहीं है. It can be a value. Value was something that is so important to me. ये अगर तूने break कर दिया rule तो बस like it's I'm finished, I'm done. Some principle किसी के लिए कोई sport हो सकता है, दिन रात सारे जीवन उन्हें उसमें लुटा दिया हो सकता है. sport किसी का देश हो सकता है, राष्ट्र प्रेम. My nation is my core, at the core, like my whole life is. So the point being that every day, the first and foremost attention to that. किसी के लिए रोल मॉडल हो सकता है कि वो हमारे आदर्श है, या किसी के लिए गुरु हो सकते हैं, रोल मॉडल गुरु हो सकते हैं कि सारा जीवन गुरु के अराउंड हो सकता है, कि जो चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरु के बिना मैं नहीं रह सकूंगा. इसलिए जो फर्स्ट थिंग्स है, व्हाटएवर आई हैव टू डू. किसी को अपना पर्पस हो सकता है, आई लिव फॉर दिस, एंड सो लॉन्ग एज दिस इज नॉट, if it is that isn't there, I might as well be dead. इतना passionately type इसको. किसी के लिए भगवान हो सकता है, मेरे लिए है. You will see my model. I feel this praying for myself, and I'll put this up. Yeah, you see one of mine. So I don't exist without it. I depend on my core entirely and exclusively. You do, whether or not you realize it, whether or not you accept it, denial कर सकते हो, लेकिन you do. I am my core, my core. ये मैंने खाली inspire करने के लिए, so that one of these things would inspire someone. Say, oh, okay, I get it. करके ना, इसलिए अलग-अलग ये डाले. It's something, whatever it is in your life that you're always found saying it, seeing it, feeling it, living it. You almost as if अपनी identity, वो मैं हूँ, ऐसे हो गया कैसे? Something said in positivity, something that pushes me to be a better version of myself every day. जितनी बार कोर के नजदीक गया मैं, उतना मैं निकला तो और अच्छा बन के निकला. फिर से जाके कोर के बारे में सोचा मन में, अपनी वैल्यू, अपना देश, अपने गुरु, अपना भगवान. जितनी बार
उधर उधर गया, उतना निकला तो और अच्छा और अच्छा और अच्छा पॉजिटिव बन के निकला। सो इट्स सेड इन पॉजिटिविटी, ऐसा कुछ है तुम में, है वो है, इतना गारंटी से कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस से कहते है ही। But I'm not sure if you've taken the time to identify what is it. Again, it's whatever it is, your own thing. That's something so inspiring, day in and day out, you know, that you'll be lost without it. उसके जीने में क्या मतलब है? Maybe there is a person in your life that वो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा ढंग से ध्यान से push yourself. Surface में 15-10 मिनट में हाँ मिल गया और अपना करके मत करना. Don't shortchange yourself. Don't fool yourself. Push yourself. This is the most important. और नहीं है तो कुछ नहीं है. In the framing of the model, बाकी जल्दी जल्दी हो जाएंगे, आप देख लेना. इसके लिए समय लेना प्लीज, इस पर ध्यान करना, इसके बारे में सोचना, इसको खुद ही को चैलेंज करना. आई एम श्योर स्लीप ओवर इट, मे बी नेक्स्ट मॉर्निंग करना है, फिर से लगता है तो you'll know what your core is, whatever it is, ना. So this is something that passionately matters. हम पागल हो जाएंगे. ऐसा है कि इससे मैं तो पागल हो जाता हूँ, जैसे मेरे कोर्स से मैं पागल हो जाता हूँ, है ना. तो और बड़ी बात, पर्सनल और इम्पर्सनल, ऐसा नहीं कि फॉर्मल आदमी, कोई पुरुष स्त्री ऐसा ही व्यक्ति चाहिए. इट कुड बी इम्पर्सनल आल्सो. इट डजंट हैव टू बी अ थिंग. इट कैन बी अ प्रिंसिपल, इट कैन बी अ वैल्यू, इट कैन बी एन अंडरस्टैंडिंग, इट कैन बी अ थियरी, व्हाटएवर. इट्स लाइक कंप्लीटली यू आर ऑलवेज ड्रॉन टू इट, बार बार अट्रैक्ट होते हो उसकी ओर, ऐसा जो भी होगा. So that's the first circle. If you can do this yourself a favor and identify that, then you're ready to move to the next one. It'll probably take you an hour, this part of it, hour and a half. If you're very, very honest and if you're working really hard, no, then maybe a couple of hours, but no more than that. It will not take you to that. So let's come back to the question. Let's go to the next slide, 13. So the next one is my personal well-being. So when I say my personal well-being, I mean my personal well-being. Simple. You know from Gita now, I really take words seriously. Na? Is Shabda Brahma, words mein hi sara sansar hai. I don't mean my personal well-being as in Kana's personal well-being, Kana's well-being, or Madhuri's, or nobody. I mean mine. Look where I placed it. The most important thing, right after the core, my personal well-being is more important as my core, because core not the main, you know. But the first is there's nothing selfish about it. स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, शिव गीता में, गुरु गीता में आता है, स्वयं कर्तुम न जानाति परस्तारयति किम. वो खुद तैरना नहीं जानते, वो दूसरों कैसे बचाएंगे? शिव जी कह रहे पार्वती को, वो तो दोनों पत्थर की नाव पे बैठे. शिव जी कहते पार्वती को, वो दोनों डूबने वाले हैं. पहले अपने, I have to strengthen myself so I can lift others up, है ना. I have to make sure airplane में कहते secure your mask first before you put it on your child, okay, because you're going to have to live if you want to save your kid, for example. इसलिए critical, it's not about being selfish, it's about being smart. Otherwise, जिनके केयर करते हैं नहीं, पहले उनको आगे तुम्हारी सेवा करनी पड़ेगी. If I don't take care of myself, पक्की बात, someone else is going to have to come and take care of me. And वही कौन सा न्याय हुआ? How am I helping them in the long run? The net value. Therefore, I must commit to my own personal well-being. Now, this you can define however you want. It could be physical. I mean, it has to be a combination of physical, mental, emotional, intellectual, spiritual, right? Some components. And क्या करे और कितना करे रोज? You heard about do something. Just do something. Go for a walk. नहीं तो फोन पे इतनी बकवास चल रही, तो walk in your own home. Or do stretching. Go to a gym, or go up and down the stairs. There is no pranayam karo, asan karo, jitna banta hai, jo banta hai, just start somewhere, do something. That's the idea. So physical, thoda, mental shanti ke liye, whether it's meditation or whatever resonates with you, and then spiritual, at least those three, the physical, mental, and spiritual. Guru Granth Sahib padhe, Sukhmani Sahib padhe, जो भी whatever connects, whatever resonates with you. तो कोई भजन करके ध्यान करे, गीता पढ़े. So the benefit of this is that it brings some discipline, and it just like lightly helps structure to my day. ऐसा नहीं होता कि willy nilly किसी भी समय कुछ भी हो रहा है, और ऐसा भी नहीं होता कि इतना टाइट बांध दिया है, इतने बजे ये करना है, उतने बजे वही करना है, उस दिन ये करना है, उस दिन वो करना है. ऐसे नहीं होगा.
हमने बहुत कर करके देखा है कि जितने जितने प्रिस्क्रिप्शन मिले थे, it started. Okay. Take it lightly. Take it easy. You need some structure. Everything needs structure, but it should be a loosely held structure, not a very rigorous structure. Rigor से नहीं होगा. Rigor अगर होगा तो उसके साथ kindness भी चाहिए. उसके साथ है ना compassion भी चाहिए. Rigor को mix up. Only then rigor withstands if there's compassion with rigor also. So identify yourself. This will take you 15-20 minutes max. Because what you're going to do is make it for yourself. I hate running, you might say. I don't want to run. I can do stretching. I don't mind doing some dumbbells or something, or I don't, asana I like. Another person was like, asana I'm never going to do it. So, tum ye karo, tum wo karo. You know already, you already know what you like, what you don't like, what you're good at, what you're not good at. So pick up whatever it is and build it around that. Someone can do dhyan, someone doesn't like to do dhyan. Someone can do reading, perhaps. Someone doesn't want to read, I can just do my own dhyan. Make it your own. So, 15-20 minutes this circle will fill up. So then, therefore, you're going to concentrate on the core, like meaning prioritize the core every day in the morning. Start thinking, sote samay core ka soche, jagne ke baad core ka soche, beech mein core ke baare mein soche. Bring it in because it's already there. Okay, make sure you don't let the day go by. ऐसा जरूरी नहीं कि सुबह ही करना चाहिए ये, शाम को ही करना चाहिए, दोपहर. Don't let the day go by without taking care of yourself. Simple as that. कम से कम कुछ तो करे, ये 3 में से 2 1-2 करे, है ना? So that's the idea. So let's go to the next slide, kind of 14. Then comes the next very, very important circle, which is key relationships. Now the key here is the word key, not दुनिया भर के relationships, है ना? तो जैसे वे लाखों जिसे बिच्छू डसे ऐसे ही भला फिर सोएगा. ये तो दुनिया भर के संबंध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा, तो शांति अविचल तत्व की कैसे पाएगा भला. So the TED talk I had, take out the kitchen. How many keys do you have in your keychain? 4 3 5 6, है ना? और 10-15 अगर हो गए किसी के तो chances are they don't own it. It's someone else's. किसी ने साथ में लाया ये लेके बैठने बोझा मेरे को नहीं चाहिए. If it is your keychain, I guarantee you're not going to have more than 5 or 6. पक्की बात. Some will be important. Some in those सोचना इस बारे में. Some will be those you use always. घर खोलने की या जो भी तिजोरी, हम अपने घर में तो तिजोरी है नहीं, खुली है, लेकिन हो सकता है किसी की तिजोरी की 10 बार खुलती हो दिन में, बंद होती हो, लेकिन there will be 2 or 3 कार की हो सकती है. So there are 2 or 3 keys that are actually keys that get used, and then there are some stupid keys like I don't know why, but okay, anyway. 2-3 ऐसे हो सकते हैं, 5-6 keys है, तो 1-2 छोटी हो सकती है, कभी किसी ने लगा दी थी Samsonite key or like stick it out. So you have to pay attention. But anyway, regardless, if you only have a finite, small, एक हाथ उंगली पर गिन सके इतनी keys होती. That's how your relationship should be. This does not contradict the Vasudhaiva Kutumbakam. I live that. Udara Charitana to Vasudhaiva Kutumbakam. But I'm very focused in investing in my key relationship. In fact, the more you do that well, जो भगवान ने अपने choice से आजू बाजू में रखे हैं, when I'm able to serve them better, is when more is put on you. And when you do that better, more is put on you. Because the strength develops also. इसलिए you can never ignore, you don't want to ignore your key relationships. तो पहले दुनिया भर की help करने जाकर लेकिन in the end कर तो सकते हो, choice किया, लेकिन then outcome भी own करना पड़ेगा. शांति नहीं मिलेगी. इसका हो गया, लेकिन घर में आके फिर से डिप्रेशन, फिर से मुसीबत, फिर से एंजाइटी, इसका नहीं हो रहा है. इसलिए do it in the right direction. Like expand yourself from inside out. Because ये technical बात है, समझ, expand yourself inside out. When you expand yourself outside in, वो shrink होता है ना? When you're expanding it outside in, it is imploding. When you're expanding yourself from inside out, it's explosive growth, explode होगा. इसलिए अंदर से बाहर से नहीं, it's unidirectional. No more than 5 or 6 keys. And then we'll talk when we look at my model.
और वो कैसे हो की रिलेशनशिप मतलब क्या है. For some reason I feel such an affinity for them without filling their bucket. मेरी कितनी ही bucket overflow हो रही हो, I don't feel like I have enough. I really, my heart hurts for them. I'm deeply concerned about them. ऐसा लगता है क्या करूँ क्या नहीं, ये रिसोर्स से वो रिसोर्स से ये कॉन्टैक्ट ये किया क्या वो किया क्या, ऐसा हो रहा है. That's nature. That's right. That's good. That is by design, and that we have made those choices. So ऐसे दुनिया भर का भी इस गाजा में चल रहा है या जो भी, वो बुरा तो लगता है लेकिन इधर हर्ट नहीं हो रहा, तड़प नहीं रहे हैं. और अभी अपना बेटा वहां होता तो दिन रात कितना फोन पे CNN जाके फाइट करते थे. ऐसे push yourself, like what are those 5 or 6 that I feel incomplete without first filling their bucket, without making sure that उनकी bucket full. So this whole thing is a mental exercise, pushing yourself to think. ऐसे नहीं जिनसे मेरे को कुछ चाहिए. Your key relationships will be real key relationships only those that you want to give something to. You are never wanting. बाकी दुनिया से तुम चाहते हैं ना, बॉस से कभी किससे कुछ से, लेकिन की से ध्यान देकर अगर देखोगे जो तुम जिसको तुम की रिलेशनशिप करोगे वो ऐसा कभी नहीं मन में आएगा इससे मेरे को क्या मिल रहा है. ऐसा ही होगा कि मैं इनको और कितना दूर कैसे दूं, जिनके साथ तुम रोते हो सब चीजें क्राई फ्लाई टॉय जॉय with them silly vulnerable जिनके साथ हो सकते हो ना. And essentially you're investing in them. Money is not time. Time is money. In fact, that is foolish statement if you think about it. But time may be money, let's say, like money is not time in the sense the key relationship with the iPhone दे दिया, iPad दे दिया, किसी को vacation भेज दिया. Hey, just spend more money. Here's a credit card. Just spend more money. Why I love you. ना, पैसे से समय नहीं खरीदा जा सकता. Relationships, the investment is that of time and attention and compassion and realness. It has to be physical, personal, heart to heart. फिर पैसे हो ना हो, क्या गरीबों के रिलेशनशिप में गरीब माँ का दिल नहीं टूटता बेटे के लिए, गरीब बेटा अपनी माँ को प्रेम नहीं करता ना, हो सकता है ज्यादा करता हो, वो तो पैसे तो नहीं था, लेकिन money not time. So pay attention to where we're putting it. So I got my core figured out, and then I've decided what my personal well-being, how I can make sure every day that's happening. Now I have picked a few key relationships that I'm going to strengthen. And then the final circle around it, which I call bread and butter. What do I have to do for a living? To keep the lights on, to pay the bills, to put groceries on the table. You have to do something. What you do is not that important as compared to that you're doing something to do that. Title kya hai, company kya hai, to kitna ye, that's not, as long as the bills are being paid, as long as the paid para hua hai, that's good enough, I think. And then obviously, you love something. You just say you want to do something else besides that. So hobby keh sakte hai, कोई सेवा कह सकते हैं जिसकी जो भी इच्छा होती हो, survival. These are just different ways. I put these to inspire thought so that कहीं ना कहीं click हो कि ये कह क्या रहा है, what is he talking about? What is it that I consume from? Which would be the job या जो भी, like because I take money from them. What is it that I contribute to? कि maybe I'm doing some service, maybe मैं temple में जाके Sunday को कुछ करता हूँ या अपने आश्रम में करते जो भी, क्यों उससे सुकून मिलता है, शांति मिलती है, अच्छा लगता है. That's the key, अच्छा लगता है. जाते जाकर के अच्छा वो पेचेक आता है उस दिन अच्छा लगता है. इनके जरूरी नहीं कि अच्छा लगता है, लेकिन उधर जाके तो दे रहे तुम और फिर भी अच्छा लग रहा है. अपनी समय दे रहे हैं, अपनी शक्ति दे रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, अपना हर कुछ दे रहे हैं और अच्छा लेके यार ये कैसे हो रहा है ना. उधर जाके तो पैसा मिल रहा है. तो इस पर ध्यान देना, सोचना है, because that's because I'm contributing to it. You will always give, ये भगवान का नियम है, feel more fulfilled when you're contributing more than you're consuming. कितना भी अमीर श्रीमंत पावरफुल लेकिन जो just anxiety आती है, at the back of the mind they're not able to diagnose it, but there is that feeling that I'm consuming more than I'm contributing. There's a net deficit in the system that I'm part of. We are here to net evolve, to add to the system. That's why we were born, to make it better, not make it worse. And when we by default we know when I'm taking more than I'm giving, अभी अच्छा नहीं लगेगा.
कहीं ना कहीं पता नहीं चलेगा क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन so try living like that. Am I contributing more than I'm consuming? And then your bucket will always be filled, always be overflowing. Something that अगर lucky हो तो some that's able to integrate personal values with professional. कि personal well-being है और वो professional में वही करे, जैसे I found myself what I do. Something you have to work, but something that you do fun, and give energy to and receive energy from. ऐसा कहते हैं ना, I get energized when I go there. I get so much energy from you. वो तो कुछ तो नहीं दे रहे थे, कोई ट्यूब नहीं लगाया, कुछ नहीं कर रहा. How is it that I get energy from you? Because you give me energy because of the relationship. So that's the model when I identify my core, when I decide, I identify my core, right? You identify your core. Your core does not have to be my core. It can be very different. I decide मेरे से क्या बन सकता है, फिजिकल के लिए, मेंटल के लिए और स्पिरिचुअल के लिए. तीन बात नहीं, गीता नहीं पढ़नी हम लोग, जैसे कोई दूसरा पढ़ना, हाँ लाइक एनीथिंग, कृष्ण का नहीं, हम लोग शिव जी के भक्त, हाँ उसमें क्या मुसीबत है, अच्छा ही है, भला है, बहुत भला है. मेक इट योर, राइट. जिस ध्यान नहीं करना है, हम जाके इसकी सेवा करेंगे. And then the key relationships, identify and just focus on those first. And then be loyal, have integrity with the work. Figure out a way to build some fun around it in your life. If you do that, so Kana, let's go to the next slide, please. 16. So, for example, this is my model. My life is balanced. That's where we started. I have identified, you know who this is. This guy, right? That's my core. There's no question about it. It's obvious. Like, I don't have to tell anyone. Every one of you would have guessed in 3 seconds if I said, what do you think my core is? No. और ये ऐसे ही नहीं चिपका दिया कि this is not a fool, this is not someone जो कुछ कहीं से brain washed हो गया, कहीं ने कुछ taken the absolute, the longest time that I could over the years. I realized that, oh my God, that's my core. And then for my personal well-being, I used to do biking, now I do running, 5K. This morning also I went. No, ये आपके घर की तस्वीर है. Yes, गुरु पूनम के दिन की. I do meditate, and you'll never, not one day, ever find me without some indulgence in the Gita. I either read or write or listen to one of those three, sometimes 2 or 3, sometimes all 3. So today actually was such a day that I did all 3 with the Gita, read, write, and today was the day when I also did Dhyan, and today was also the day when I went for my 5K. बहुत बोर हो रहा था. क्या बताओ, इस सुबह कहाँ दौड़ना है, लेकिन I have to, especially today because I'm going to have to talk about this. So, and then so यहाँ पर 3 of the 5 key relationships are in this picture, this Mount Denali. In last week, past the Arctic Circle. So there's Kana, there's Madhvi, there's Mohini. So 3 of the 5, 4th is my mother. So because the reason for that is I chose her. I have an obligation, right? I proposed to her. I asked her hand for her. I brought her in my life. It's my duty. It's my obligation to make sure that I am filling her bucket as much as a person. They didn't have a choice. I decided to have children. I brought them. So it's my absolute duty to make sure. So these are, you'll always find me having time for them. No matter what I'm doing, I'm willing to drop it. And first, imagine this. This will help. Can I imagine this example? If I'm in my office, so when I was with Washington Gas, my office was right across the Capitol building, 101 Constitution Avenue. So, and imagine I have like 6 chairs. So 4 of the chairs are named chairs. नाम लिखे कुर्सियों पे. मैं इधर बैठा हूँ, टेबल है और सामने टोटल मेरे ऑफिस सपोज 6 चेयर्स है. तो वो 6 कुर्सियों में से 4 पर नाम लिखे है. उसका क्या मतलब है, इस पे दूसरा कोई नहीं बैठ सकता, है ना. तो सपोज माधवी का नाम लिखा है, मोहिनी का नाम लिखा है, काना का नाम लिखा है, मेरे माँ का नाम लिखा है, तो भावना उसका नाम है. तो कोई आएगा तो इधर वो ऑब्वियसली. और एक जो अलग दूसरी, और एक जो 5वीं चेयर है उस पर लिखा है रिजर्व. नाम कोई नहीं लिखा, लेकिन रिजर्व है. तो कोई अगर आया, और एक जो 6ठी चेयर है, वो चेयर है बस है,
ये तो चार सामने है, वो थोड़ी साइड में है, वो अलग से है। कोई अगर आता है छठा तो बैठ तो सकते हैं, जरूर बैठ सकते हैं, लेकिन वो इधर नहीं बैठेंगे, इधर नहीं बैठना चाहिए, है ना, क्योंकि इधर नाम लिखे वैसे। तो that's how specific it has to be. The one that says reserved, for example, they're not, that doesn't have a name. I'm talking about my life. I'm talking about my, that's how open I am with you, right? I'm talking, and it's being recorded also. उस पर नाम नहीं लिखा है, but it does say reserved, meaning there are 4 people in my life. उस पर नाम नहीं लिखा है, इसलिए मैं उनके नाम नहीं बताता कौन है, लेकिन there are 4 people in my life जो उनके लिए मेरा सारा अवेलेबल, ऐसी बात नहीं है. Only when they come to me and they're sitting in the chair, I will drop everything and I will cater to them. I'll serve them. These named chairs, I have made my business about Kana, Madi, Moini, and my mother to make sure that their life is staying in order. For you, it doesn't have to be. It could be your friend. It could be your father. It could be whoever, your mother-in-law. It has to be yours. No, सीधी बात है कि again your past, your history is different, your past is different, your future is different. You have to decide नाम किन के लिखने उस पर. और ये जो तो दूसरे जो 4 लोग अगर कोई आता है तो they will have a priority over that. And then other than those 4 people, अभी तो 4 named and जो दूसरे 4 जो इकट्ठा आके तो नहीं है, एक बार एक आता है, एक बार एक आता है वैसे. तो कोई आता है तो then that person becomes the person that I pay attention to because I've already taken care of these, you know, so that everybody gets the proper time and attention that way. So that's how I have oriented around my key relationship. I've been super blessed because for bread and butter, I do no get hungry. You all know, you all support also, right? That my work, my business, my job, if you will, is to go from place to place to place to raise funds, build kitchens, make sure that thousands of kids who are deprived of meals get food. And then my fun is my Krishna, my Gita Yoga, essentially. So my bread and butter, this circle, the black circle is my no kid hungry work. And what I really want to do, what I really have fun doing is the Gita Yoga part of it. Therefore, my personal values and my professional work are aligned, for instance. Then it doesn't matter how much money I make. I make enough money to go book any. Kids are all right. They went through college. But I'm no longer working for money. You know, that's not, I used to, but that's not the point because now I have figured out a model. So, and it takes care of me and my family as well. So, Kana, I think let's wrap it up. Let's finish it off. Yeah. Otherwise, if you don't do this, what will happen is beware. This is a caution. Life will feel good. This looks pretty. Yeah, nice spiral. कोई दिवाली है या कुछ जो भी लग रहा हो, birthday celebration, something different color, different spiral down. Let's get the next word. When you hear spiraling down. ये धीरे-धीरे नीचे जाएगा, नीचे लेके भी जाएगा. So अगर ध्यान नहीं दिया अपने जीवन की ओर, अपने मॉडल, पहली स्लाइड याद है ना, मूवी 30 सेकंड वाली, वो क्या देखा था, ब्राउन स्मोक कर था बस, वो समय तो आ ही रहा है ना. So if you're just cruising through like, oh, life is good, I'm eating, I'm mating, I'm secure, I'm having fun, going to movies, कोई IPL देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सब तो ठीक हो जाए, लेकिन if these start constantly mixing with each other, you know what happens? Go to the next slide, Connor. Soon you find yourself later on, ये सारा गुत्ती हो जाता है. इस कहते बड़ा उलझ जाता है जीवन, अभी क्या करें, what is what, where is the head and where is the tail. So this model allows you to आराम से धैर्य से शांति से इसको सुलझाने के लिए. That's why it is important. Kind of go to the last final slide. So, and if you are able to rebalance your life, I live in freedom, and I know, I'm telling you that I'm going to live in freedom also. And so never mind that brown smoke. I'm ready for it this moment to be there. No, Aram said, because I've taken care of investors. So this isn't about me. When I say I actually mean you. Because I see myself in you. Commit to yourself. Do this for yourself. You owe it to yourself. You owe it to those key relationships. You must bring balance in your life. More important, it is possible to bring balance in life. You can do this. It is simple. I think I've already put this in WhatsApp, so you can fill it the way you want. And that's it. Thank you.
run the life. Anji. Balance in life, your smoke also becomes white. Not brown anymore. There's no smoke left. Smoke is gone. That's Well said. God wills.